Let me add some co-host once again. Just give me a second. Yeah. All right. आप लोगों के जो वीडियोस हैं वो आज मैं लेट इवनिंग में एग्जामिन करूंगा, ऑन विच यू हैव स्पोकन ऑन पब्लिक स्पीकिंग. इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैं बिल्कुल उस सब्जेक्ट को मिस नहीं करना चाहता. सो टुडे हैड बीन अ वेरी एक्टिव डे. हाय अवतार, गुड टू सी यू. Yeah. So I never wanted to miss. So I am just giving some more time so that I can do the entire evaluation bilkul aaram se, and I'll give evaluation to each one of you. Just bear with me for this time. Today had been a very very active day for me so far. Though some people have this freedom to enjoy it like a Sunday, but in my case, thoda sa different hai. All right. So I'll start with some information today. All right. I'll start with voice modulation. Voice modulation का feedback मैं बहुत सारे लोगों को दे रहा हूँ. Voice modulation कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे. So for hi Amy, how are you doing? Amy, let's speak in your style. Hi, this is Amy. How are you doing? Hope you're doing fantastic. Yes, I'm doing fantastic. Hope you're doing fantastic too. Nice to meet you. Super, super. I love that. And I had been almost there when that sea background came. I wish I could dive in there. I said that also. Mm. That was a lovely background. Okay. We're going to talk about voice exercises. As you know, there are vowels in English language: A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Yeah. So A, E, I, O, U, these are five vowels. Now, interesting information is that when you say A, E, I, O, U, you never touch your tongue and lip anywhere. Mhm. Yeah. And you compare it with other words wherein you will either touch your tongue, either you will touch your lips. So there will be a contract of either your tongue or lips. Okay. You can just try that later on. But AEIO is something which can help you solidarize your voice. Now, some people have very solid voice. Some people have. I hope everybody is comfortable in English because we have some guests who are not comfortable in Hindi. So I'm keeping it in English. Thank you very much for the acknowledgement. Now you talk about voice exercises. See, there are multiple voice exercises which I can teach you, but I think to start with, we can all apply this for people who have high volume pitch. For example, you have high volume pitch, and that is exactly what I talk about. And in this range, if I talk, it's my high range. Sorry to do that to you, but that was a little high. But if I talk about really, really low, you'll feel like, why is he talking so low? Moments ago, he was just talking so high. And immediately, what happened to him? He suddenly leveled it down so nicely. And it looks like he's just going to make us sleep. Well, that's not going to happen. Now I'm back to the medium octave. So I call this as low octave, medium octave, and high octave. Now, in this low, medium, high octave, you need to understand how you can practice it first. Okay. So we'll start with vowel sound with low, medium, and high octave. Okay. You can make notes. This is critical. So when you will use the low octave, you will start using the sound of A. A is the first vowel. A. Inhale, exhale, and give it a full throw. Again, once more, low octave. A. Now, this is for the people who have very high sound, who speak in very solid baritone. उनको मैं बोलते रहता हूँ धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो. उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो धीरे कैसे बोलना है. They are not able to understand how to reduce the volume. So for them, this exercise is beneficial. A. This is for the low octave. Then medium octave is A. This is medium octave. All right. So make sure when you are doing these exercises, you have to inhale and then you have to exhale.
Make sure when you are doing these exercises, you have to sit in 90-degree, relax at your comfort, and then just do it. Okay. Now, if you have low voice, some people have low voice and they don't know how to increase their voice. Like what the exercise we did with Rajiv also, Rajiv has shown significant improvement because what he was doing, he was actually not speaking to his maximum potential. Sandeep is here, Sandeep Singh from Jalandhar. Okay, Sandeep also had the same problem, which I noticed. Anyways, I'm coming back to the exercise. So to increase the voice, this is for the people who want to increase their voice. When you release it towards the end, make sure that you are actually in sync with your vocal cord. Now, why I have suggested these two exercises, low octave, mid octave, and high octave. Some people have the challenge of not speaking in a higher language, in a higher range, sorry. So then you can use the higher range of exercise. Some people are not in the habit of going back to the low octave, so they can use the low octave exercise. I have given you demonstration for all three. The same way you will use E, I, O, U. A, E, I, O, U, low, medium, and high octave. And you have to do three sets. Okay. And it's not a bad idea that even if you are good at high octave, you can do it for high octave. You can do it for low octave as well. That's completely fine. Just do 3 sets for minimum 10 days. Especially the people who are struggling for voice modulation, this is for them. If you can do this exercise next 10 days, you will see significant changes coming to you in your voice. Maybe you will become a radio jockey. And what about uh, anchor? And how about hosting a show? Wow, that's so exciting, isn't it? So, you will see some great changes coming to you from nowhere because everything is inside us. It takes deep courage, conviction, and collaboration of your thoughts and willingness to bring the transformation. I always say, whenever you create a transformation inside you, the credit goes to you, not me or not anyone else, because you are putting in the efforts. I've been showing ways and path to everybody, but if some people are following it, they only deserve and they get the result. So this is the first thing which I wanted to share about the voice exercise. Okay? This will also help you to create your vocal gravity and this will also strengthen your muscle. Remember, this is a muscle. This area is your muscle. The more this muscle is in contract, the more this muscle is in action, the more powerful, formidable it will become, and it will give you great support. It will add more resistance and resistance to your voice. Cool? All right. So now I'm going to the second point of face expression. Now, face expression actually requires dialogues. क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? Do you love me? Yes, I love you. So when you actually deliver a dialogue, it requires expression. Or uh, I would straightforwardly say that when you deliver a dialogue, it is connected to your expression. But what if I tell you that there is no dialogue and you have to create an expression? So you see, this requires a lot of practice, but today I'm going to give you an exercise where you will create expression because I can see a lot of people, a lot of you who have joined this course are struggling with expressions. When you say, oh my God, oh my God, oh my God. So when you create expression, you actually convey a little more than what you mean to say. Hi Priya, thanks for joining in. Right? So I'll just tell you the exercise for facial expressions and I'll give you the 3 variants of it. And I'm going to do it in anger, smile, and love expression. Now you see, you have done gymming or yoga or
some kind of exercise in your childhood, maybe a PT at the school. One, two, three, four, five, six, seven, right? Remember that? Those golden times. Ah, what a golden period we all had spent. Alas, we could go back, but this is the way for life. We all have grown up and now we are matured individuals. Now we need to understand that facial expressions is actually an art, and it is something which we can all create. It's a learned art. So we will be doing the same 1 to 10 repetition with our expression. For example, you have anger expression. Here we go. Watch me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. So that's anger expression for you. Now the second expression is smile. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. So that's 1 to 10 for smile. And what about the love now? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. So you see, in these kind of expressions, when you do 1 to 10, automatically you get into the flavor of that expression, and suddenly you realize that you can do more with the expression. Now, by just practicing these expressions, hi Sneha, thanks for joining in. Now, just by practicing these expressions, you will notice that there is a considerable amount of change which is coming to you, and you will start feeling like, oh my God, I'm changing. Oh my God, I'm changing with public speaking skills. And you know what? If you are not including the gestures, facial expressions, the voice, then it's going to be a problem. Now you see, I'm just trying to be a little notorious over here. I can actually take inspiration from Avatar. Avatar speaks in accent because he's in that country. I tried to mimic that, I think last week. So when you will see that there are certain people, I think Kenny, आपके साथ थोड़ा सा challenge आ रहा था. So you know, some people speak with a nasal voice. Now I'll show you how nasal voice works actually. Okay, this is a part of voice coaching which I train people upon. You see, nasal voice. Nasal voice is when you speak from this area, you'll certainly realize that this area. Okay, I'll take you through. Remember an Australian speaking to you and guiding you something. Hey, how are you doing? So you see, if you'll go take straight this way, that way, and you have to take the right direction. And from there, you have to take the first left. You'll find a hotel. It's beautifully made. And all you need to do is just park your car over there and go to the reception and ask for Arthur Sherry. And he's going to explain you then what to do next when you will follow his instructions. You'll follow that there are a lot of things which you need to do during the day. So you see, when I was, I was just connected with my nose, my voice was coming up like this. But the moment I release my nose now, and you will see that immediately my voice gets changed. And again, if I pluck my nose like this, again my voice becomes like this, and then just this becomes like this. So for the people who are speaking with nasal area, you will find that their voice may little disturb you, but that's okay because it is all workable. It is all inside you. Over a period of time, you have developed it. And all I'm trying to say is, I'm not trying to say that you lose your original instinct. Well, that is not something which is my message. My message is when you are doing public speaking, when you are in front of the public, when you are on the stage, you have to sound in such a way that it should soothe. So, Kenny, when you speak, actually, when you speak, you are soothing. I've been watching your videos. Nothing to take away from, but it's just that when you can create sharpness, why not? If you can create more authenticity and ethnicity to your entire voice, why not? If you can create more baritone on your voice, why not? Look at the way I'm enjoying and saying, why not? Why not? And that's voice modulation. I can also say, why not? Why not? But I'm not saying, why not?
So when you use this is actually a voice modulation covering the entire circumference of this area. So see, this is the area which has a lot of muscles and nerves. And the moment you'll start understanding the graph of your entire face, you will actually realize that there is more to public speaking. There is more to your voice. Okay, this is about voice and facial expression, which I wanted to talk about. And the second aspect is related to storytelling. Now, some people are doing storytelling in their videos, and it's a very very vast topic, ladies and gentlemen. All I'm here to say that whenever you are doing storytelling, whenever you are creating a story, you should have characters, you should have conflict. It should not jeopardize the entire story where you are not mentioning anything and you're just trying to tell a story. No, 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 no. You should not do that. You actually have to speak in such a way that I should be a part of the story. It should make you should make it vivid. Now just imagine you are in a beautiful place. Wow, sand everywhere, the gray color sand. You just pick it up and it's coming out of your hands. How about that beautiful hill? Wow. You really want to touch that? It's so amazing. And look at the eyes behind those hills. It is mesmerizing in your eyes. And what about that beautiful tree on the right hand side? Lush green grass. It is so smooth like a silk. You just touch it and you feel awesome. And how about that cool breeze coming on your ear? What about that smooth flow of water beneath your feet? Oh my God. It is so encouraging. It is so soothing. I really want to touch that water and feel the voice. And how about the smell of the environment? This is so refreshing. I always wanted to live like that. And how about those beautiful words flying in the air? Oh my God, look at that. That's a cute one. Ah, yellow color. That's my favorite. I cannot just miss that. So when you actually make it vivid for audience, you oversimplify. And when you oversimplify, you connect me to the story. You make it vivid. If you were vivid, what I was just trying to explain you, give me a thumbs up. Was it vivid to you when I was explaining you? Just give me a thumbs up like this. Just like this, okay? If you do not feel, that's fine. Give me a thumbs up. Most of you are giving thumbs up. So, this is exactly how you do the vivid explanation of the story. And secondly, whenever you are creating a story, there's always a character and there's always an antagonist. Antagonist is the enemy. It's like Amrish Puri of the movie. Who is Amrish Puri of the movie? So when you will actually think about the antagonist, the person who is not friendly is always an enemy of everything, is always against what is going on in the routine life. Now that's where you create the antagonist. And that's where the story arc gets created. It gets more exciting, interesting, and you will actually connect audience superbly at the bottom level. Starting with character, involve, make it vivid, make it interesting with your sounds, and then make it vivid for the people. And I always say this: don't tell the story, show the story. Show it. Show it with a vivid explanation. Show it with the examples. Show it with the entire objects. Every single thing. If you're talking about the room, tell about the room light, tell about the door, tell about the water bottle, tell about the mobile charger, tell about the mouse, the laptop, the table, the chair, the microphone, the perfume, whatever is there, just make it so vivid that I as if I feel like, oh my God, I'm here. Yeah, I'm here. Yeah, I'm here. I'm with you. So take the audience on the journey with you. And if you can do that in few seconds, what I'm doing, well, it took me a lot of years. And somebody asked Michael Phelps, you just won with over 1.5 seconds. How are you feeling? Was it a luck? He said, it took me 15 years to achieve this luck. And all I'm saying is that it requires practice. And remember, don't get into a myth. Practice never makes you perfect. What? Moments ago, you were saying practice is everything. Well, I'm saying practice never makes you perfect. Practice only makes you better in public speaking. Because in public speaking, there's nothing called perfection. Perfection is a myth. And I'm here to burst your myth today. Public speaking is never about perfection.
Public speaking is always about self confidence. And if you can show self confidence, trust me, you can become an amazing, effective, and powerful public speaker. And that is exactly what my aim is. And I am just trying to help each and everyone out so that you can understand there's something more to it. There's something more to it. Sandeep, you have just joined. Sandeep, you're here. Please unmute. Yes, Late ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? I was a bit late, sorry. ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸੰਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਥੋੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ what is the source of this problem if you are open to I share? don't remember, it's an age old problem, I think. ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਓਹੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਲਾਸਟ? ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਓਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, get into the problem. See, I try to understand what I'm trying to highlight here is when you get into the problem, when you identify the problem, then you will seek for the solution. ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੁਝ, ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਚਲੋ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸ਼ਾਈ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੋਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਸਟ ਰਿਪੀਟ ਆਫਟਰ ਮੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ, ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਘੱਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ। I don't ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੌਇਸ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਵਾਈਡ ਓਪਨ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਕੀਤੀ ਸਲੋ ਜਾਵੇ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਸਲੋ ਹੈ। ਸਲੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਟ ਆਫ ਸਪੀਡ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਬਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਸਲੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋਰ ਸਲੋ, ਹੋਰ ਸਲੋ। ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਲੈਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਦੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 18 mm ਤੋਂ 25 mm ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ 12.5 to 17.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਜ਼ ਦ ਗॉड ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ। So when you win the match, yeah, definitely. Are you sure, sir? Yeah, definitely. So when he speaks, he's actually a male voice. He's a male, but due to his testosterone and estrogen level, he's actually speaking and he's sounding like a female. And vice versa kar do anu. Usha Uthup, famous Bollywood singer. दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया,
शान से। ਹੁਣ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਦੀ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਐਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਵੌਇਸ ਅਸੀਂ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਥਰੋ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੌਇਸ ਥਰੋ ਔਰ ਵੌਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਵਧਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸੰਦੀਪ, ਠੀਕ ਹੈ। This is my area. This is my tummy area. This is my tummy area. And now I will inhale. जिवें प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, उस तरह करना है। Breathe out through mouth. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। This is one exercise. The second exercise, I'll keep my hand here again. Inhale. Ha! 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 पूरा वॉइस थ्रो करना है। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੌਇਸ ਹੈਗਾ, ਵੌਇਸ ਥਰੋ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਟੂ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੌਇਸ ਥਰੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਟੀਮਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਵੌਇਸ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟਰੈਂਥ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੌਇਸ ਥਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਰੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, जब भी यार जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਸ, ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। You cannot overdo it like I'm overdoing it right now to explain you, but you have to make sure that you are using this area, right, left, down, up. This area has to be there. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। This is for everybody actually, for people who want to activate their voice. Because sometimes what happens is when you start speaking, sometimes your vocal cord is not supporting you and you have vocal fry. ਕਵਲਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ vocal fry ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਥਰਮਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, then create video. The best food or the best lubricant for your throat is water. Remember this. जब भी आपका गला गीला होगा, आवाज एकदम पावरफुल, स्मूथ, लाइक सिल्क निकलेगी। ठीक है। एक हमिंग साउंड की एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारा वॉइस रेंज, ये किसी किसी का वी आर लो, वी आर हाई मैं लिख के देता हूं, तो वॉइस रेंज कैसे बढ़ाना है और घटाना है उसकी एक्सरसाइज बता रहा हूं। दिस इज फॉर संदीप ऑल्सो एंड फॉर एवरीबडी। हम 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 हम, इट्स अ साउंड ऑफ हम। इस एरिया में आपके इचिंग होनी शुरू हो जाएगी हल्की हल्की। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे, वैसे वैसे आपका वॉइस रेंज बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। जिसको लो रेंज की दिक्कत आ रही है, उसको भी एडवांटेज मिलेगा। जिसको हाई रेंज की ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो हाई रेंज से लो रेंज पे नहीं आता, उसको भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। सो बोथ द पीपल हु आर फेसिंग चैलेंजेस इन लो रेंज एंड हाई रेंज will get a lot of advantage. This is one thing I want to cover. And then now we are going and entering towards a little difficult phase of our last 7 days of the course. And I really want all of you to understand how to start and end the talk. How will you start the talk? Hi, my name is Arthur Sherry. I work as a public speaking coach. I belong to New Delhi.
and I have won so many awards. I have written so many books. Do hell with that. I'm not interested. I'm your audience. I'm not interested. Do hell with your coaching. Do hell with your books. Do hell with your public speaking. I'm not bothered. I'm your audience. What's in it for me? मेरे लिए क्या है उसमें? Why you have wasted my first 12 seconds? I'm giving you my precious time and precious years. What have you said for me? Start of the talk is critical when you are responsible for doing public speaking. If some host is presenting you in a formal keynote speech, then you should be mindful of introducing you or not. Now, that's a very different call. Right now, we are in the part of the course, we don't have to introduce ourselves. Immediately come to the point. If the topic is public speaking, um, I wanted to say something, but actually, I'm not able to. This is exactly how I used to speak 3 months back when I started doing public speaking. But over a period of time, when I realized that there is more to it, I started coming in front of the camera. I started removing my consciousness, and one day I met somebody who has changed my life forever. And that was the moment I was waiting for in my entire life. I'm always in gratitude with the God. I'm always feeling abundance now because what I always wished for, I have started doing it. And that is public speaking. You can create a start where you can connect with the audience. Always use the start to connect the audience. Today, I will be giving 3 promises to each one of you. Number one, through this video, I'll help you to overcome fear of public speaking. My second promise is I will help you to connect with the audience with public speaking. And thirdly, I'll tell you how to create powerful stories through public speaking. And I'm going to share these 3 promises through my talk today. Let's start with the first promise. Now, that's a start. As far as your start is giving direction to your entire talk, that is a start. And towards the end, always make sure that there is some or the other learnable thing which you can offer to your audience, some call to action, some kind of gratitude, some kind of experience. You can end with a small story. You can end with a question. So I want to ask you now, will you ever try public speaking or just keep on watching my video? I'll leave that answer up to you. Thank you. So the moment you will ask a powerful question and end it, you will be like, your audience will be like, oh my God, he's asking me. Huh? And there are multiple ways to end your entire video. For example, you can also share a small anecdote. I never did public speaking in my entire life, but this course has actually shown me the way because I've seen many people from different walks of life have started speaking, and just by doing regular speaking, there is great amount of improvement. So what are you waiting for? Just pick up your phone, start talking like me. Who knows? You can be the next greatest public speaker of all time. Thank you. So when you are giving a great end or call to action, now that is what I call an end. So make sure that you're starting the talk, ending the talk, and you are actually adding some more things. For example, metaphors. What is metaphor? Who can tell me what is metaphor? Anybody who would like to explain? Anybody who already knows? I've been speaking for long. Anybody who would like to explain? So metaphor is like something comparing. It's a Yeah. comparison. So any example for metaphor? Like once upon a time, I read a poem, Caged Bird. So there it was the metaphor for Black Americans. It was given a bird which is in a cage. So they were compared to a bird, Hmm. and the white Americans were compared to a free world who can fly anywhere. Mm-hmm. These kind of things. Mm-hmm. Okay, good. So you see, when we use metaphors, we're actually
connecting with the things which are not known to the topic or not connected directly to the topic, but somehow we're trying to prove that this actually can be relatable to what we are talking. For example, oh my God, Avatar, you are a rock star. He's a rock star. Now, we are just trying to tell that by saying the rock star word, we're trying to actually give the feeling of something worthy. Or, for example, these days COVID-19 is on. God knows when this unprecedented illness will evade. But a hospital bed is a parked taxi with meter running these days. Now, this is also a metaphor. So I'm comparing the hospital bed with a park taxi which has a meter running, which means it is very, very expensive these days to get admitted to a hospital. And we can also say that fill your paper with the breathings of your heart, or talk with the language with breathings of your heart. That means talk dil se, talk by heart, talk with your heart. So this is a form of a metaphor. Now, there's something called analogy. Life is like a box of chocolate. You never know what you're going to get. Now, here we are just using the chocolate word is because it is unexpected. Life is unexpected. That movie was a roller coaster ride of emotions. Now, here, roller coaster is not a ride actually. We are just trying to tell that roller coaster ride means it was up and down every time. We could not even access what's going on. All the way through, it was really entertaining and connecting. A roller coaster ride. And finding a good man is like finding a needle in a haystack. That means it's very rare to find a good man because it's very difficult to put that needle in a haystack. So when you start using the metaphors and when you start using the analogy, some people are unconsciously doing it. बहुत सारे लोग क्या है unconsciously अपने पूरे के पूरे metaphors analogy को use कर रहे हैं. I already said anecdote स्टेफनी बहुत अच्छा use करती हैं और यहाँ पर स्नेहा है. स्नेहा is also using her facial expression, body language बहुत अच्छा use कर रही है वो. So you need to learn everybody like Amy also use her entire body language quite well. So you can actually start understanding who's doing what. Kamaljeet is also using some extraordinary content. She uses a lot of examples. Kenny is also using a lot of day-to-day examples, real life examples. So I can see that a lot of people are actually doing what is required, what is expected in public speaking. Like Richu is also very, very authentic when he speaks in front of the camera. So some people like Dr. Nell is also very authentic when he speaks. Vrinda is introducing rhymes, and Dr. Saranda also is talking very authentically, genuinely. She's trying to just bring out everything authentically. So I think when we can watch each other's video, we can sense that. Ankita Nayar, you're also there. When she speaks with a lot of expressions. That's quite good. Ankita, पीछे की background noise ठीक कर लिया अब? हाँ, good. Keep smiling. God bless you. And the same goes with Kajal. काजल भी ऐसे हंस के बात करती है, स्माइल करती है. तो ये सारी चीजें बड़ी important हैं, right? Like Aina also does use her entire non-verbal cues quite well. So there are certain things which we are not aware, and sometimes you need a coach to tell you. And I'm just telling, like Payal, when she uses her examples, her analogies, she make it so vivid. Oh my God, pani gir gaya. So these kind of things, it just connect you. So that is very powerful when you do audience connection. That is quite original. Like Gaurav also, when I see his videos, he's very, very authentic when he talks. He talks with the non-verbal cues is non-verbal skills where you are not using the voice, your body language. Yeah. All right, my dear friends, that's all from my side. I hope you have some set of questions. I've been speaking for last 40 minutes and it was very much needed, very much required from my side to address this. And I'm sure I've been able to give full justice to what you have just addressed and spent your time with. Time is precious for all of us. I'm sure it has added value to what you already know about public speaking. And you can ask your questions now. We have another 20 minutes to go. We will wrap up on time. And I have a couple of announcements to just share with all of you. But before that, I'll take your questions one by one. If you have any questions, you can please ask. Sir, actually, I missed the filler part last time. Fillers, I didn't understand.
नेल्सन बोल रहे हो ना आप? Yes, yes, sir. अच्छा, ये हॉस्पिटल का क्यों दिखा रहे हो फोटो? आप अपनी फोटो दिखाओ भाई। Sorry, actually मैं I am on duty. मैं थोड़ा सा call आया था. अच्छा थोड़ी देर अच्छा I missed the part. Some अच्छा 5 minutes. so you want to know about fillers? What kind of Yeah. fillers you have to remove fillers, or you want to know about the fillers? What is fillers and whether to put it or to remove it or Okay, fillers is something like you know what I'm trying to I'm telling you, and I think by now you have idea that you know what is fillers. Do you have any idea now? yeah. It is so distracting, isn't it? It is just killing my phrases, my sentences. Killers. Okay, so just to avoid these fillers, you have to use pauses like this, like this, and like this. Short term pause, medium term pause, and long term pause. Short pauses are from 0. 0.4 to 0.8 seconds of range. Medium pauses 1 to 3 seconds of range, and long pauses 3 to 5 seconds of range. Anything beyond 5 seconds is taken as idiot, dumb. आता नहीं इसको बोलना, आ गया है सामने, टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा भी. So you have to be mindful when you are using the pauses. It should not go beyond 5 seconds unless until it is strategically used. Understand that it's a pro skill, by the way. Silence is also a form of a communication. Okay, yes, sir. I hope you have an idea now, doctor. Great, superb. And thanks for joining there. I hope everything is well and you are doing great work. You are the real warriors, actually. Salute. Salute. It's our duty. Salute to you, sir. Really appreciate. मुकेश, क्या बात है, आप वीडियो नहीं बना रहे आजकल? मुकेश सेमालती, वीडियो बनाओ आप. Hello, sir. Actually, sir, due to some problem in my family, I'm working in 2 shifts. One shift I have to go to office, and another shift I work from home. So, Okay, sir, okay. I work around 14 to 15 hours a day, so time बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा. Okay, okay. Please take care and I hope everything is fine now. Thanks for joining in. Thank you, sir. मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ऑप्टिमिस्टिक बात ही करता हूँ, नेगेटिव बात की तरफ ज़्यादा जाता नहीं हूँ मैं, तो इसलिए डोंट माइंड. आई एम जस्ट कीपिंग इट वेरी पॉजिटिव. माय बेस्ट विशेस एंड ब्लेसिंग्स विद यू and hope to see everything very very fine soon. Just take care, okay? God bless you. All right, Stephanie, you have some question? I think raising hands. Yeah, go ahead. So in almost all my videos, I've been told to improve my camera angle, and I've tried like 3 to 4 angles, like नीचे से, ऊपर से, side से, and I just don't know how to do it. अच्छा, ओके, देखो अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिख रहा हूँ स्क्रीन पर, स्पीकर व्यू आ रहा है. अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा है ना ये मेरे से ही बात कर रहे हैं. Now this is the right camera angle when you are watching the camera with the right entire angle, wherein my forehead is parallel to the camera lens, and I am in this body gesture where I'm in front of the camera. आप देखो इसको, आपको ये लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूँ? नहीं. You got the difference? Yeah, I did. Thank Okay. you. बस यही है और कुछ नहीं है. Cool. Okay. Yeah, Kawaljeet. Yeah, Payal, I'll come to you. Kenny also has one question, so I'll come to you after Kawaljeet. Kawaljeet, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? I'll come to you, Kawaljeet. Kenny, you can ask your question. I had raised hand to tell you about metaphor back to the, like, Oh my God. Okay, it is still up. about- Okay. Okay, you can tell about metaphor if you want. Go ahead. so it's a direct comparison, you know, like she is a rose. It's a direct comparison and it's different than simile. Simile is like indirect comparison, that she's as beautiful like her as a rose, but she is a rose. So Super. that is what we can. Okay, cool. Thank you so much. Ankita also mentioned comparing 2 things. He fought like a ferocious lion. Yeah. Yeah. Okay, good. Yeah, Payal. Yes, sir, actually, I want to ask, in few of my videos, you have mentioned that you are low.
So VR low means it should be low or it is low in the video actually? VR low is not applied. VR low is not applied in the entire video. For example, if you are saying something and you are saying in this range only, I want you to use this range also, which I'm using right now, because now this is VR low for you. And if you just step down a little one step below, and you will find that this is voice range low. And if I'll come one level up, now this is voice range medium, and this is voice range high. हाई मीडियम लो. ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं मालूम है आपको? Why I'm pointing this out? Because this is one of the most important skill in public speaking. This is how you create jolt. This is how you create suspense. This is how you create curiosity. I'm done. Yeah, great. One more thing, I generally speak very fast. बचपन से ही लोग को, आंटी को तो मेरी बातें समझ ही नहीं आती थी. They always used to ask my mother कि पायल ने अब क्या बोला, मुझे समझाओ. But somehow I have not got that feedback in the videos. मतलब जो मैं वीडियो में बोल रही हूँ, आपकी रेट ऑफ स्पीच अगर ठीक आ रही है तो ठीक ही आ रही है. अगर आपकी रेट ऑफ स्पीच, like my friends and all says कि तू इतनी जल्दी जल्दी बोल जाती है, कुछ समझ नहीं आता. तो consciously I try now, तो maybe तो I have tried that. मतलब अब ठीक हो गया है थोड़ा. तो I just thought. अच्छा एक मिनट रुको, अब यही रुको आप, ठीक है, होल्ड ऑन. जनता का वोट लेते हैं. हाँ जनता, ये रेट ऑफ स्पीच फास्ट है या रेट ऑफ स्पीच स्लो है? मुझे तो मीडियम लगी, ठीक लगी मुझे तो. इफ यू फील ओके यू कैन गिव अ वर्चुअल थम्स अप लाइक दिस. सबका साथ सबका विकास. पायल जी, थैंक यू सो मच. सभी का मिला, क्योंकि मुझे बचपन से यही फीडबैक मिलता है कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ. ये भी देख लो, आपको तो जानता ही नहीं कोई यहाँ पे. Yes. सबका फीडबैक पॉजिटिव है. रेट ऑफ स्पीच ओके, टिक मार्क. Yes, thank Tick you. mark checked. Yeah. Thank you, everyone. And most of you are commenting on the videos also, so this is the proof. Awesome, great. Richu, I'll come to you now. Sir, I had the same question which Payal ma'am just asked. So we are low. Now I'm all clear. Thank you. आप क्लियर है ना? आप देखो ऐसा ना, उसमें अब आपकी वॉइस का बैरिटोन बहुत पावरफुल है, लेकिन हमने इसको लो भी रखना है. क्योंकि कई बार ना क्या होता है, हमारी वॉइस जब पावरफुल होती है ना, लोग सोचते हैं such an arrogant girl. She is very arrogant, yeah. No, we are not arrogant. We're just trying to put forward a point. But the way our voice is depicted, the way our voice is analyzed, it feels like we are arrogant. So we have to be mindful. This is another perspective I'm giving in public speaking, because when you know something, you are treated as somebody who has great insight and knowledge. But when you do that, simultaneously people start judging you. Yes. So you have to be mindful with your voice, because voice is the greatest treasure human mankind has, and you really need to just respect it. Sure, sir. Thank you. Awesome. You're welcome. Any other question? Nishant, आप थोड़ा सा मुस्कुराना शुरू करो और मुस्कुराने की वजह ढूंढो कोई. नहीं, ऐसे नहीं है. अगर आप सर मेरे हिंदी वीडियो अगर आपने देखे थे, जो मम्मी के साथ इंटरव्यू किया था, वहां पे थोड़ा बहुत तो स्माइल हुआ था मेरा. और ये बैकग्राउंड चेंज करो. बैकग्राउंड तो चेंज होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है. हाँ, फीडबैक जो स्टोर रूम में बैठना पड़ेगा. कोई बात नहीं, स्टोर रूम को साफ करके बैठो, थोड़ा लाइट लगाओ, 2-4 लाइट बल्ब लगाओ वहां पे. जी सर. 1000-1200 रुपए खर्च करो, आपका फायदा होगा. और जो फीडबैक दे रहा हूँ वो फीडबैक लो. जी सर. और वो उससे आप इम्प्रूव करोगे. दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग इट विद यू, एंड आई एम श्योर यू आर टेकिंग इट पॉजिटिवली. ऑल द बेस्ट. या आयना, यू वांट टू आस्क समथिंग? थैंक यू. या, मोस्ट वेलकम. Aina, you have some question? Anybody else who has any question? Okay, Priya. Priya, are you there? Yes, sir. How are you, Priya? I'm good. How are you? All good. देखो, प्रिया हमारे साथ कराची, पाकिस्तान से हो. प्रिया? Yes, sir. How are you finding this entire course going on right now? We want your views. और थोड़ा सा सामने आओ, पूरा सामने आके बैठो, बिल्कुल बिंदास, and just share your heart out. Go ahead. Sir, I am feeling amazing. मुझे बोलने का बहुत शौक होता है, लेकिन अभी जब पब्लिक स्पीकिंग पे आई हूँ, आपसे बहुत सीखा है.
एंड आई एम हैप्पी कि आपने मुझे इतना सिखाया है. कुछ ही वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं. ड्यू टू माय स्टडीज मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, लेकिन मैम कारा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. ओके, गॉड ब्लेस यू प्रिया. प्रिया, जब आप बोलते हो ना, थोड़ा सा ये टंग है ना, ये वाला, इसको रोल आउट करना है, रोल इन नहीं करना. इसको बाहर जी की सर. तरफ आप जैसे रोल करोगे ना तो वॉइस कट जाता है. ठीक है, जैसे शोएब अख्तर है, जानते हो शोएब अख्तर को? जी जी. हाँ, शोएब जैसे बोलता है ना, आप कुछ कुछ वैसे ही बोलते हो, वॉइस आपके वर्ड्स ईट हो जाते हैं. तो जो रोल ऑफ टंग है वो तभी करना है जब हमें एक्चुअली में कोई पर्पसली कोई वर्ड को रोल करना है. रोल, रोल. नाउ आई एम पर्पसली रोलिंग द टंग. अदरवाइज मुझे अपनी टंग रोल नहीं करनी, मुझे उसको जितना हो सके स्ट्रेट रखना है. ये टंग स्ट्रेट रखना है. जितना ज्यादा बाहर की तरफ रहेगी उतना ज्यादा मेरा वॉइस थ्रो क्लियर होगा और मेरे वर्ड्स ईट नहीं होंगे. अदरवाइज वर्ड्स ईट हो जाते हैं बीच में हल्के हल्के. तो ये आपके लिए ऑब्जर्वेशन मैंने एक रखा हुआ था. आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू. थैंक यू सर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Avtar, how are you? Yes, go ahead, please. You can just unmute and speak, please. To ask you if it's possible to have a list of the abbreviations that you're using, because I'm quite new to this, and like when you're using VR and SP or whatever the sort of abbreviations are, is it possible to have a list so I can then make a little bit more sense on your feedback as well? I have been watching other people, but we're just trying to sort of see what the abbreviations mean. Okay, okay. So I'll give you two answers here. Okay, start. One answer is that I am trying to invite you to ask and to make sure that you are curious to ask. What is VM Author Sherry? What is VR Author Sherry? I want to keep it interactive. I don't want to download everything. I want you to ask, what is AOI Author Sherry? Why you have mentioned it? I want to keep it interactive. That's one answer. The second answer is I will definitely share it right after the session. Perfect. That's great. Thank you very much. Most welcome. Anytime. Super cool. So now it's my turn. Can I ask? Yeah, please. So what are the areas I should go further and I should improve? I think you should not overdo body language. That's one. All right. Okay. And when you are doing body language and non-verbal cues, you have to make sure that it is orchestrated very well with the message of your talk. That's two. And number three, you should bring more authenticity and more effectiveness in the content. कई बार बहुत अच्छा content आता है, कई बार थोड़ा सा low रहता है. Okay. And number four is, I really want you to come ahead the way you are talking. There is something special and good about you, and I think you should come out more and start doing more speaking. Okay. Four areas quickly for you. Yeah. Thank you, sir. Most welcome. Sir, I got disconnected. I'm so sorry. That's okay. Please tell me. Sir, आप बता रहे थे कि I was telling stories and वो हर एक में करना is fine या monotonous हो जाता है, हमें हर बार अलग-अलग चीजें करनी चाहिए try? नहीं, स्टोरीज तो आप बताओ, कोई इश्यू नहीं है. स्टोरीज, एनेक्डोट्स तो डेफिनेटली बताने चाहिए. अब जैसे आप ये देखो ना कि एक तो मैं आपको बोलूं कि चलो उबले छोले खा लो. अब उबले छोले का अपना टेस्ट होता है. एक मैं आपको बोलूं उसमें सिर्फ नींबू और मिर्च मसाला डाल के खाओ, उसका अपना टेस्ट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो हम सब चीजें एक तरह से नहीं खा सकते. एक हम कहते हैं कि नहीं, थोड़ा प्याज टमाटर भी डाल के देखते हैं और थोड़े से उबले आलू भी डाल देते हैं. लेट्स मेक इट अ चाट स्टाइल. ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, हमारा इंग्रेडिएंट जितने हम डाल देते हैं ना, उससे हमारी टॉक इफेक्टिव बनती चली जाती है. यहाँ पे इंग्रेडिएंट कौन से डालेंगे, यहाँ पे एनेक्डोट आएगा, मेटाफोर आएगा, एनालॉजी आएगी, एक्सप्रेशन आएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन आएगा, और धीरे धीरे आपका टॉक अपने आप बेटर होता चला जाएगा. तो आपको वन बाय वन सबकी एक मास्टरी करनी है. वन बाय वन आपको सबको यूज करना है. जैसे मैंने आज मेटाफोर, एनालॉजी का यूज करने के लिए सबको एंकरेज करा है. नाउ आई विल बी कीनली लुकिंग फॉरवर्ड ईच वन ऑफ यू टू यूज दिस इन योर नेक्स्ट वीडियो. Otherwise, I'm going to write in area of improvement, analogy, metaphor, missing. I want you to use it because this is the way we actually, you know what? This is the way we speak. यार ये तो
यार ये तू क्या गधों की तरह चलता रहता है। अब हम यहाँ गधों की तरह चलने को एक्चुअली में मेटाफोर ही बता रहे हैं, लेकिन वो हम इतना पुअरली बता रहे हैं, वो सुनने में अच्छा लगता है, वैसा लगता है आप मुझे गधा क्यों बोल रहे हो। So, you don't have to do this in public speaking. You have to use the metaphors wherein it is connected with your entire message and central idea of the talk. That's it. और कुछ नहीं है। Thank you, sir. हाँ, yes, अजंता। सर मेरा क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है? देखिए, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इंडिविजुअली मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर भी एक दो चीजें आपके हाईलाइट कर देता हूँ। आप बहुत स्लो बोलते हो कई बारी, ऐसा क्यों? सर कभी कभी एकदम सुबह उठ के वीडियो बनाती हूँ तो वो शायद से नींद लग रहा होता है शायद, हाँ, पता तो नहीं। उसके लिए पहले आप अपनी वॉइस को एक्टिव किया करो, थोड़ा सा वार्म अप किया करो बॉडी को, और उसके बाद वीडियो बनाया करो। दैट इज माय सजेशन। यू शुड बी वेरी एक्टिव इन व्हेन यू आर टॉकिंग। ये बहुत जरूरी है, ठीक है? श्योर सर, थैंक ऑल यू। राइट, ऑल द बेस्ट। Yes, yes, you are active. God bless you. Thank you for joining. You're welcome. Bye. Bye. See you there. See you. Okay, good. Anything else? If you don't have any questions. Hemant, yeah, good evening. Yeah. Hello. Yeah. Yeah, please go ahead. Yeah, Hemant, yeah. Yes, Hemant. मुझे हेमंत एक कहाँ हो आप? दिख नहीं रहे मुझे। वीडियो तो चालू है सर मेरा। हाँ हेमंत, आप दिख गए। ओके, यस यस। सेकंड स्क्रीन पे शायद हो। हाँ यस यस, नाउ यू आर विजिबल। प्लीज गो अहेड हेमंत। राइट, थैंक यू। मुझे एक सिचुएशन मतलब हमेशा ये फेस करता हूँ मैं, जब मुझे कुछ बात करना होता है या मुझे कुछ आई मीन एनी टॉपिक रिलेटेड टू, इवन टॉपिक नहीं भी हो तो कुछ मुझे रिलेट करके बात करना हो, तो उस टाइम पे जो नॉर्मली जो मेटाफर होता है या एनालॉजी होती है वो याद करके मुझे रखना पड़ता है, या फिर उसको लिंक करके बताना होता है, तो उस समय याद नहीं आती है, या उस समय जो बताना चाहता हूँ वो दैट टाइम इट डजंट क्लिक्स। सो हाउ शुड वी रिलेट टू द टॉपिक्स एंड कीप द मेटाफर और एनालॉजी? ओके, तो आपके हिसाब से ये मेमोरी की प्रॉब्लम है या फिर ये वैसे जनरल आप हर चीज को याद नहीं कर पाते, ये उसकी प्रॉब्लम है? जनरली थोड़ा सा मुझ में ये ऐसा होता है कि कई बार मैं चीजें भूल जाता हूँ, तो उस समय आई कीप समथिंग इन फ्रंट टू see and then I remind myself. Okay, see, the best way of doing anything in public speaking is firstly you get into the subject, then let your subject get into you, and then both of you let your subject get into your brains of the audience. ठीक है? तो दूसरा पर्सपेक्टिव ये है इसमें कि आप अपनी जो कन्वर्सेशंस करते हैं डे टू डे अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, उन conversations में you start using metaphors. All right, that's one of the best ways you can actually adapt something in your life. And the third way is when you are planning to include any metaphor or analogy, पहले उसको आप लिख लीजिए, और लिख करके उसको याद करने के कई तरीके होते हैं, मेमोराइज करने के तरीके होते हैं। न्यूमोनिक्स एक तरीका होता है, न्यूमोनिक्स, ठीक है? तो न्यूमोनिक्स के जरिए भी आप सीख सकते हैं। तो न्यूमोनिक्स में क्या होता है कि आप जब किसी भी चीज को आई थिंक उसके पहले वर्ड से क्रिएट करते हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं एक, जस्ट गिव मी अ सेकंड। न्यूमोनिक्स का होता है जैसे आपका पहला वर्ड होता है। अब आप कोई मेटाफोर निकालिए, कोई है आपके पास मेटाफोर अभी? कि मैं निकालता हूँ। जी, दैट मूवी वाज अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस। जैसे मान लीजिए ये मेटाफोर है, ठीक है? तो इसका निमोनिक्स क्या होगा? TMW, दैट मूवी वाज ARCROE, TMW ARCROE, ठीक है? इससे क्या होगा, आपके फर्स्ट लेटर से आपको पूरा सेंटेंस याद होना शुरू हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। सो यू नीड टू सी हाउ व्हाट फिट्स इन योर ब्रेन क्विकली। निमोनिक्स इज वन ऑफ द वेज। एंड सेकेंड एरिया इज कि आप कैसे किसी कीवर्ड को याद रखते हैं, ठीक है? जैसे इसमें कीवर्ड क्या है जो मैंने अभी बोला, रोलर कोस्टर राइड और इमोशन। मूवी, रोलर कोस्टर राइड और इमोशंस, ये तीन कीवर्ड है।
तो आपने 3 कीवर्ड याद रख लिए, आपको सेंटेंस पूरा अपने आप याद आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, yeah, you know what, I watched the movie last night and that movie, my god, that movie was a roller coaster ride of emotions. अभी मुझे एकदम याद हो गया क्योंकि मेरे दिमाग में कीवर्ड जल्दी फिट हो रहा है, मैंने एकदम याद कर लिया. ऐसे आपके दिमाग में क्या फिट हो रहा है? निमोनिक्स फिट हो रहा है, या फिर आपके दिमाग में कीवर्ड फिट हो रहा है, या फिर आपका कोई विजुअलाइजेशन पिक्चर फिट हो रहा है? यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. These are the 2-3 ways where you can memorize it very, very quickly actually. I hope this was helpful. Yes, sir. Yeah, very full, very nice. Okay, and pay Thank my you, sir. regards to your mom. She was really awesome. Thank you. Thank you for bringing her to the interview. बहुत अच्छा लगा. Pleasure, sir. आप Thank लोगों you. के Thank इंटरव्यू you. बड़े अच्छे गए थे भाई. Congratulations to all of you. Very wonderfully done, Kenny ji, your hubby, and Avtar ji, your son, Kawal ji, your father-in-law. And I could remember Dr. Nelson, your daughter, and all of you. जिसके मुझे याद आ रहा है, Payal, your husband. Everybody was really awesome. Emmy, that uncle, I mean, was he your client or something? Emmy? Okay, I think Emmy is not there. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yeah, he's a mutual friend here. Okay, all right. All right, somebody has asked what to do to improve pronunciation. Pronunciation is related to English language. आई थिंक अगर आपको हिंदी में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है या इंग्लिश में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स. थोड़ा सा उस पर फोकस करें, और कॉन्सोनेंट साउंड, जो वॉइस साउंड होती है हर एक वर्ड की, अ, स, श, र, ल, म, व, जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन द साउंड्स, एंड थ्रू साउंड्स यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन वेरी वेरी क्विकली. दैट इज व्हाट आई हैव टू से. ये सबसे ज़्यादा जो पहचान ग्रुप का जो वो है, उनके साथ थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. कुछ बच्चे हैं वहाँ से, आप लोगों के साथ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ज़्यादा है, बिकॉज आई फील दैट यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश, और आई कैन से कि आप लोग इंग्लिश को यूज़ कर रहे हो पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि शायद आपको ये लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग इज़ अबाउट इंग्लिश. ये कभी मत समझ लेना. पब्लिक स्पीकिंग इज़ नेवर अबाउट इंग्लिश. पब्लिक स्पीकिंग इज़ जस्ट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स इट. If you are using the language Hindi, regional language, Punjabi, that's completely up to you. Until unless your message is not clear, you're not a good speaker. If your message is clear in any language, you're a good speaker. This is the fundamental of public speaking. Okay. All right. Okay. Before we say goodbye to each one, we are done with the time. I want to do two couple of quick announcements. First is that we have the certificates going on, and some of the people have filled the form, and their I think dues are there. Kara, if you can just please remind everybody. एक्चुअली जिन्होंने गूगल फॉर्म जो है वो फिलअप किए हैं, सब ने तो पेमेंट जो है डिपॉजिट करवा दी है. कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म फिलअप कर दिया है बट पेमेंट अभी तक नहीं पहुंची है. तो जस्ट रिक्वेस्ट कि आप पेमेंट साथ साथ जो है वो आप अगर ट्रांसफ़र कर दें, तो फिर जो सर्टिफिकेट प्रोसेस है वो हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टाइम लगता है सर्टिफिकेट्स वगैरह करवाने में, सब कुछ करने में. थैंक यू. Okay, thank you very much. This was just a reminder to make sure that each one of you is cascaded with the right information, and we are not running after money for anything. It is just to make sure that we are all on the same page, and it's very difficult to individually ping everybody and tell your payment is due, your payment is due. So we just want to avoid that situation, and I requested Kara to take this up here. That's one. Then secondly, we also wanted to request all of you that keep in mind that towards the end, that is day 21, you are going to create a video which will be related to your before and after video. So start recognizing which is your best video as per you so far, and which was your worst video. Start getting into that understanding from now, so that when you will actually start creating that activity, you will have to use one video which is before, and you have to use another video which is after, and you have to club it. So you can take help of anybody who is good in mobile applications. I'm sure someone of you is good in mobile application. You can do all the interactions in the group for creating that video before and after. And this is a task of day 20 or day 21. So I'm just indicating you to keep that in mind.
so that you can produce the video on time. Because if you have to club both the videos, there are applications which are available on Android and iOS Play Store, and you know, anybody who is just aware of it, you can drop in the name of the application and you guys can take it forward. Apart from that, कल का जो टास्क है थोड़ा सा मुश्किल है और उसकी तैयारी रखिएगा. It's little difficult and I'm just alerting you so that you guys be little ready and be responding to what we are trying to achieve here. And it's all going to be very, very fun and learn at the same time. So that's it from my side. Any other question you have? Anybody who would like to ask something? Let's end on time today. Will there be next virtual meeting like this? Yeah, there will be a third mentorship session. I believe that is going to be the last one. Kara will update you in the group. And I request everybody to participate in that. Okay. How did your TED Talk? Sorry? How did your TED Talk go today? TED Talk went amazing, sir. Amazing. Very, very good. Thank you for asking. सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकते हैं ना, प्लीज बताइए. सर मेरा कभी कभी ना वॉइस रेंज बहुत हाई भी हो जाता है तो कभी कभी लो भी हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? मैंने अब उसका एक्सरसाइज बताया. आपका तो बहुत इम्प्रूवमेंट आया बेटा. आपने तो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करा है. इनफैक्ट आपका वॉइस रेंज लो में थोड़ा दिक्कत था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपने उस पर बहुत अच्छे से काम करा है. तो आपका एफर्ट दिखता है उसमें, और बिल्कुल वैसे ही करते रहो आप आगे. जहां पर कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको बताऊंगा. इस पूरे वीडियो की रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में आ जाएगी. वॉइस रेंज के लो और हाई के एक्सरसाइज मैंने बताया, दोबारा से इसी वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा. थैंक यू सर. ओके. यस Kawaljeet, you want to say something? Yes sir. Hello sir, I want to ask a question, sir. Given you give us some topic to tell, then according to that topic, our voice range will go up and low, and whatever topic you given. क्योंकि सर कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जो हमको बहुत जोश आ जाता है उस टॉपिक में, तो हमको बहुत अंदर से बोल्डनेस फील होती है. वॉइस रेंज वही हुई ना, तो फिर वो बढ़ जाती है. और कई टॉपिक जैसे हम बोलते हैं तो वो एक सोलफुल वॉइस उसमें होनी चाहिए, जिसमें कि जैसे पीस वाली वॉइस, जैसे कि आपने दिया था एक टॉपिक हम लोग को कि संगीत है तो हम हमारी सोल से कैसे कनेक्ट होता है. तो वॉइस रेंज तो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होगा ना सर, तो कि हम एक ही वॉइस रेंज में बोलते चले तो नहीं जाएंगे सर. ओके ठीक है कवलजीत, मैं इसको दो तरीके से आंसर करता हूँ. इट्स अ गुड क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन. टॉपिक के हिसाब से वॉइस रेंज कभी नहीं होगा. दैट्स योर स्ट्रेट आंसर. ठीक है. हमेशा वॉइस रेंज या वॉइस मॉड्यूलेशन आपके फ्रेजोलॉजी यानी कि जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है. तो आप कौन से टॉपिक में, कौन से सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो दैट्स कंप्लीटली अप टू यू हाउ यू वांट टू डू इट. नहीं सर, जैसे मैंने मान लीजिए बोला ये उसको कि पब्लिक स्पीकिंग एक रामबाण की तरह है, तो इस पे हम फोर्स करेंगे कि हम इसको जनरल एक ऐसे ही बोल देंगे सर. नहीं, आप इसमें अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं इसको कि पब्लिक स्पीकिंग एक रामबाण की तरह है, तो आप इस पे स्ट्रेस ले सकते हो कीवर्ड पे, और आप इसको वॉइस रेंज लो भी दे सकते हो या हाई भी दे सकते हो. ये डिपेंड करता है कि आप अपने पूरे कंटेंट में क्या मिक्स मैच कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये. जिस चीज को हम बोलना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि इसको इसकी उपमा दी हमने, तो जिस चीज की हमने उपमा दी तो उसके सब्जेक्ट दैट इज कि उसकी उपमा को हम थोड़ा फोर्सफुली बोलेंगे, तभी तो आएगा कि ऐसा होना है. तो उस वर्ड हम फोर्सफुली बोलेंगे ना सर. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, उसी को स्ट्रेसिंग बोलते हैं. जिसको आप बोले ना फोर्सफुली बोलेंगे, उसी को स्ट्रेसिंग बोलते हैं. और उस सर पे स्ट्रेस करना है. सर वॉइस रेंज जो होती है ना सर, वॉइस रेंज जो होती है वो कभी कभी हमको लगता है कितनी होनी चाहिए, ये भी इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है. क्योंकि ना सर मैं तो बहुत ऊंचा बोल लूंगी, लेकिन कई बार ना थोड़ा अंदर से अभी थोड़ा सा ओपन तो हुए हैं,
पर अभी थोड़ा और जंग लड़नी बाकी है सर, अभी तो बहुत आगे जाना है। नहीं, आप बहुत आगे आ भी गए ऑलरेडी, और जितने आगे आ गए हो आप, उतनी जल्दी आप जैसे लोग आगे आते नहीं, बट आपकी बड़ी हिम्मत है। आपकी हिम्मत की हम सब दाद देते हैं। सर वो जो इंटरव्यू वाला आपने में टॉपिक दिया था ना सर, तो वो तो मेरे लिए एक समझ लीजिए कि बहुत बड़ा चैलेंज था सर। तो वो हमने वो हुआ उस दिन के बाद से हमें किसी ने पूछा भी, कोई मैम ने उसमें लिख के कि हाउ इट हैपेंड, तो मैंने सर लिखा था कि इंटरव्यू के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि आपने हमको ऐसा टॉपिक दे दिया सर कि वो तो मेरे लिए सच में जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज था सर। लेकिन हमने हार नहीं मानी सर, और भगवान ऐसा है की कंवलजीत, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाता है हमें। ध्यान रखना मेरी बात। मैनी मोर टू कम। तो और मैनी मोर चैलेंज तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैनी मोर ब्रेक थ्रूज टू कम। चैलेंज तो अपने आप इजी बना ही लोगे। बहुत कुछ हमने जीता पब्लिक स्पीकिंग से आपके ये में रह के सर। और सर मुझे ये कहना है कि अब मेरे अंदर जो भी कमियां हैं सर, वो अगर आप बताएंगे, इवन एवरी स्टूडेंट का बोलना चाहिए सर। जैसे आप मुझे बोलेंगे सर तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम अभी जिस फाइट कर रहे हैं जिस चीज से, तो हम उसको फिर इम्प्रूव करेंगे सर। आप जो लिखते हो ना सर उसमें वर्ड्स, तो उसमें कई वर्ड हमको समझ में नहीं आते हैं। आप तो बताओ हम कौन सा वर्ड समझ नहीं आया आपको? एक्चुअली सर कल मेरा बर्थडे था, तो हम लिख के रखते, हमने सोचा था कि हम नोट करके रखेंगे, तो कल हमने वीडियो भी इसलिए बहुत फास्ट में बनाई सर। तो हम सर थोड़ा आप बता रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं सर कि जैसे मेरे दिमाग में कोई पॉइंट आया तो मैं उसको लिख लेती हूँ। जैसे हम लोग पहले बचपन में बनाते थे ना, पॉइंट बना लिया, पॉइंट दिमाग में है तो कम से कम उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। तो एक बार हुआ सर कि हमने लिख के रखा था, तो पॉइंट ऐसे लिख के रखा था कि हम भूल ना जाएं। वो मेरी बहुत स्टार्टिंग की वीडियो थी सर, लेकिन फिर बाद में हमने उसको माइंड में रखना शुरू किया। लिखती हूँ, फिर माइंड में उस पॉइंट को रखती हूँ, फिर मुझे उस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ सर। तो सर मुझे तो सर बस इतना जानना है कि या क्या ये जो जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है, इसको कोई मुकाम मिलेगा सर? क्या हम इस लायक हैं सर? देखो ऐसा है, आपने 4-5 सवाल इकट्ठे पूछ लिए हैं, तो आपको मैं एक ही आंसर देता हूँ, सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। हर इंसान हर चीज कर सकता है, ठीक है? इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं होता। अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल से भी ज्यादा स्ट्रांग है। कभी माइंड में ऐसी कोई बात आती है तो उसको भी किल कर दीजिएगा। उसके अलावा बाकी जो आपका बोलने का तरीका है, थोड़ा सा उस पर आप और काम करें, ठीक है? हो सके हो सके हो सके तो अपने बॉडी वेट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हो सके मेहनत करके। मैं बॉडी वेट तो सर एक्चुअली ना मेरे सिजेरियन हुए हैं 4, तो उसी वजह से है थोड़ा, लेकिन है कि मतलब सर अभी तो मैं उस पर भी फोकस कर रही हूँ। तो हम जो हर्बल लाइफ भी लेते हैं, और हम लोग का का जो चलता है शाम को 6 o'clock, तो वो मैंने सर गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व हो जाएगा अभी, तो बाहर जाती हूँ सर। अभी मेरा कीर्तन का टाइम है, मैं भजन पढ़ती हूँ गुरबानी, तो सिमरन कराती हूँ। तो अभी मैं आपके सेशन के चक्कर में मैं छोड़ के आई सर। हाय हाय हाय, आप जाओ भाई, जाओ अटेंड करो आप, नहीं और सर, हमारा ही मत्था टेकना वहाँ पे। हमारा रोज का रूटीन है सर। हमारा हाँ। मतलब होता है सर, अब तो 3 o'clock से शुरू हो गया, तो 3 to 6 पाठ भी होता है, कीर्तन भी होता है, तो सर बस वहाँ बिजी हो जाते हैं। चलो तो आज ठीक है, कंवलजीत आप अटेंड करो वहाँ पे, और आप ऐसे ही अपना चुलबुलापन जारी रखो, स्वीटनेस अपनी बरकरार रखो, और ऐसे ही मेहनत करते रहो, और लाइफ में कंप्लेंट्स बहुत कम रखो, और अबंडेंस की तरफ फोकस करो। मैं बोल रही हूँ सर, आप सोचेंगे कि हम इतना बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे हम आके बोलते हैं सर। तो सर ये है ना कि सर आपने वो फिल्म देखी होगी ना, शोले, तो उसमें जया भादुड़ी को आपने देखा होगा सर। वो मतलब जब वो मतलब बैचलर थी तो कैसे फुदकती थी सर इधर से,
और खुश रहती थी। आपको वो सीन याद आएगा जब वो तांगे के पीछे दौड़ती होती है और जब वो शादी रहती है तो उसका सारा चुलबुलापन और हर एकदम शांत हो जाती है, उसको किसी ने पुश करके दबा के सब चीज उसके अंदर उसने समेट ली हो सर। तो अब वैसे ही थे सर हम बचपन में और हमेशा से ऐसे ही हैं, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत दबी लाइफ के बाद अब थोड़ा ओवरकम हुआ है सर। तो बस आप लोग का ऐसे ही के साथ रहेंगे तो हम और ओपन हो जाएंगे सर अच्छे से। तो अच्छा सर, if you always supporting me that I will do my best sir. It's my promise sir. We will always support you. God bless you. ਐਵੇਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਆਪਣੀ, ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੋ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰੋਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। Relax raho tusi and keep smiling. God bless you. All right, everybody. Thank you very much. It was really wonderful to interact with each one of you. Thank you for sparing your precious time on Sunday. I hope this was a value addition to each one of you. I look forward for your videos now. Have a nice evening. Bye bye. Sir, मुझे मैम को थैंक यू बोलना है। बोल दो, बोल दो। तारा मैम, I want to say you thank you from my heart because आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत ज्यादा। और आप और सर मेरे साथ जो खड़े हो ना, मैं आपका कभी नहीं भूल सकती सर। और जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स है ना, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत प्यारे हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much.